आजादीको अमृत महोत्सव अन्तर्गत एफसीआई डिभिजनल अफिस ग्याङ्टोक सिक्किमले एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजित गरेको थियो। कार्यक्रम ग्याङ्टोकको एउटा होटलमा आयोजित भयो। कार्यक्रमको मूल केन्द्रित विषय अन्न योजना अनि पब्लिक वितरणमाथि थियो। डाकेको कार्यक्रममा राज्यका खाद्य अनि नागरिक आपूर्तिका सचिव म्याडम दीपा रानी थापा, विशेष सचिव म्याडम डिकी योन्जन, उप सचिव अनिल सिग्देल, दूरदर्शन केन्द्र ग्याङ्टोकका सहायक निर्देशक निरज कुमार पाण्डे अनि एफसीआईका कर्मचारी वर्ग साथै वेस्ट पोइन्ट स्कुल र आरिथाङ सेकेन्डरी स्कुलका नानीहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रमका सञ्चालक एफसीआईका कमर्सियल प्रबन्धक आनन्द सरकारले गरेका थिए। This tagline is the brainchild of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The main object of this Mahotsav, as we set out by our Honorable Prime Minister, is to reach out of our people of this great nation with our achievement and future endeavors on this auspicious 75th anniversary of Indian independence. In this chapter of Mahotsav, we are focusing on Anna, Yojana and public distribution. You all know that Food Corporation of India was set up on 14th January 1965 by an Act of Parliamentary Enact on 10th December 1964, titled as Food Corporation Act. The main object is setting up FCI of Food Corporation of India was to number one, to safeguard the interest of the farmer by giving the remuneration price for their produce, to maintain a handful of buffer stocks as a measure of food grains, food security, so as to make food grains available at reasonable price among the people, especially to the weaker and vulnerable section of the society, and also to meet up emergency requirement during exigency like drought, flood, war, etc. Movement and transportation of the food grains is another part of FCI. To distribute and sales of food grains and to intervene into the market as a measure to maintain price stabilization among the nation. After 56 years of our inspection, we can comfortably say that we are able to fulfill all our objectives as mentioned. After independence, the worst situation we have faced was during COVID-19 pandemic, which erupted in March 2020 and is still continuing. To crack the spread of COVID-19, government had to declare and enforce strict lockdown throughout the country. During this lockdown, it was extremely difficult for our people to earn their daily meal and to maintain livelihood. To enable them to maintain livelihood and not to go to sleep with empty stomach, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji set out a gigantic food program. This is one of the biggest program in all over the world. दूरदर्शनका सहायक निर्देशकले आफ्नो वक्तव्यमा एफसीआईले गरेको बहुमूल्य काम जस्तै खाद्य भण्डारण अनि वितरणमाथि केन्द्रित गरे। साथै एफसीआईद्वारा वितरण गरिने फोर्टिफाइड राइस र त्यसबाट साधारण मानिसले पाइने लाभमाथि अनि सिक्किममा चलिरहेको जैविक खेतीमाथि प्रकाशित पारे। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ अन्य खराब भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा देश इतना अन्न उत्पादन कर रहा है कि चल रहा है, सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा है। और इसमें अभी फोर्टिफाइड राइस की बात हमारे वक्ता ने बताई, तो ये फोर्टिफाइड राइस क्या है? इस चावल में कुछ मिनरल्स, विटामिन्स मिक्स कर दिए जाते हैं, तो इनको धोना नहीं है, अगर धो देंगे तो भी वो बह जाएंगे। इसलिए फोर्टिफाइड राइस का भी नया कॉन्सेप्ट चला है और ये बड़ा अच्छा है। और इस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। और
हम लोग अधिक से अधिक अन्न को, अच्छा इधर ऑर्गेनिक खेती की भी बात चल रही है। सिक्किम ऑर्गेनिक खेती करता है और हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी बार बार ऑर्गेनिक खेती की बात कह चुके हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक की ओर आए, क्योंकि स्वास्थ्य उसी से बेहतर रहेगा। जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं उससे अन्न तो अधिक उत्पादन हो जाता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर पड़ रहा है। तो धीरे धीरे हमको ऑर्गेनिक खेती, और उसमें कम उत्पादन होगा तो रखरखाव की हमारी एफसीआई की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। क्योंकि रास्ते में जो बर्बाद होता है, कभी कभार चूहे खा जाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन में भीग जाता है, तो इस तरह से जो अधिक से अधिक बचाव करना पड़ेगा। वैसे तो विधियाँ विकसित हो रही हैं लगातार और गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है, फिर भी मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एफसीआई को कि हम लोग अपने इसी सतत प्रयास से अपने देश के लोगों का पेट भरण और पोषण के लिए आगे बढ़े। राज्यका खाद्य अनि आपूर्ति विभागका सचिव म्याडम दीपा रानी थापाले आफ्नो वक्तव्यमा सिक्किम राज्यमा विभागबाट चलाइने 1320 फेयर प्राइस दुकान, खाद्य वितरणको निम्ति 36 गोडाउन साथै 2वटा एफसीआई डिपो रहेको जानकारी दिए। उनले भने पीएमजीकेवाई स्किम अन्तर्गत साधारण जनमानिसले निशुल्कमा चावलको लाभ पाइरहेका छ। यसमा एफसीआईको ठूलो भूमिका रहेको छ। उनले भने starvation as such during the COVID time, and I think this is due to the dynamic leadership of the country, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who has thought well in ahead how the food is to be distributed through the PDS system. I think this is a unique scheme in India where the PDS system, through the PDS system, all the population are given food grains so that there is no starvation, and that also at a minimal rate or at sometimes even free. So during COVID, we realized that a lot of people were moving from the cities back to their villages. We all saw that in the news. And then this concept of PMGKY scheme was formulated, and every member of a family gets 5 kilos of rice free of cost through the PDS system. So in Sikkim, we have 1,320 fair price shops all over the state, from where the ration is distributed. So I'm happy to tell you that we have 36 godowns all over the state, in our state, and there are 2 FCI depots, one in Rampur and one in Jodhpur. So FCI brings the rice in these 2 depots, and from here our transporter takes it to the different godowns in the state, and from the godowns it is delivered to the fair price shops, and from the fair price shops our beneficiaries lift their ration. So I'm very happy to inform the august guest here that we hardly have any complaints. Our officers, district level officers and our food godown in charges are working day in and day out to ensure that rice reaches the targeted beneficiaries. So under PMGKY, as already told to you by the FCI officer here, that it is free of cost. So all the people right now are getting rice free of cost, and that also of good quality. If anyone can go to, if any of you go to a fair price shop, you will be surprised to know that the quality of rice is very good here. In fact, FCI has been instrumental in giving us good quality rice for the state of Sikkim. Our Honorable Minister and the Chief Minister, Sir, has spoken to the Union Minister in Government of India, and from then on, very good quality rice is being provided to the state.
compared to other states, like our neighboring states in West Bengal. So a big applause to FCI for giving us good quality rice. And in Mr. Indrajit's speech, which was read out by the manager here, he said that they were expecting a land to be provided by the state to construct a storage godown in Jordan. I'm happy to inform you all that we are already in the process. The DCSO South is in a lookout for a suitable land, and the Honorable Minister also is aware of this. So hopefully by this year we may be able to identify a land and hand it over to you all. As my special auditor said, that this is a celebration, so let's make it joyous and stop giving long speeches. I think the children would be happy to watch the cultural program. So saying this, thank you so much FCI for having us and conducting such a nice program for the children especially. Thank you so much. कार्यक्रममा एफसीआई द्वारा फोर्टिफाइड राइस माथि छोटो भिडियो पनि देखायो। कैसे पकाने के तरीके में, कैसे स्वाद में कुछ फर्क होता है। फोर्टिफाइड चावल को पकाने का तरीका स्वाद और खुशबू सामान्य चावल जैसा ही होता है। लेकिन ये आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर है। फोर्टिफाइड चावल पूरे परिवार, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। कार्यक्रमका अन्ततिर आरिथाङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका नानीहरूले छोटो नृत्य प्रस्तुति गरे। Thank you.